Good afternoon, students. This is the second part of our chapter or second section of today's part. That is customization of desktop, page number 18. Okay. So when we say we want to do something regarding customization of desktop, then we have to click on desktop, right click on the desktop, and you will get all the customization in display and personalized setting, where you can customize your desktop. Two options they have provided. Once again, I will repeat. You have to just right click on desktop, display setting and personalized setting. These are the two main options in the shortcut menu that will support the customization of desktop. Okay, let's see. Click on the personalize, the left button. And here are some two types of customization. First is through the background, or for the screensaver, you have to go in themes, or sorry, you have to go in lock screen. Okay, so first we will go in background. We will change the background here. Okay, even you can change the fill colors like this. You can change the color. You can observe the changes at the top. Here you can change the observe. You have to observe the changes at the top of the picture. Okay. Now the second part, that is changing the screensaver. Here, what is the use of changing screensaver? At the time of login or log off your system, you must have some pictures. So you can use some slideshow, your own pictures like this. You can use Windows Spotlight like this. Okay, so three pictures they have given. You can add your own pictures also. Okay, so three options they have given: Windows Spotlight, picture, and slideshow. According to your requirement, you can set the login screen. Okay, now I want to change the timeout setting. There are two settings. One is the screensaver setting. If I want to time out the system, or I want to throw the system into the sleeping mode, then I can throw the system into 1 minute. That means it will be in a slope mode. आपका सिस्टम कुछ टाइम के लिए हॉल्ट में चला जाएगा, कुछ मिनट के लिए स्टॉप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा. Okay, so mostly we have to set 10 minutes for the sleeping. जितना आप ज्यादा टाइम देंगे स्क्रीन के लिए, उतना ज्यादा वो टाइम लेगा स्लीपिंग मोड के लिए. अदरवाइज हर 2 मिनट्स में वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा. सो ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टाइम टू set the system in a sleeping mode. Okay, so mostly we take 10 minutes. If you take 5 minutes, after every 5 minutes it will go in a sleep mode. That means it whole system will be goes in the sleep mode or the halt mode. मतलब sleep mode में चला जाएगा. और जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी पॉइंटर में मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, तो आफ्टर एग्जैक्ट 5 मिनट्स वो स्लीप मोड में चला जाएगा. अभी इसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जस्ट 1 मिनट कर देंगे, और वो जो है सिस्टम अगर आपने 1 मिनट कर दिया, और अगर मैंने ये पॉइंटर फॉर 1 सेकेंड के लिए स्टॉप कर दिया, तो 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका टेम्पररी शटडाउन हो जाएगा, कुछ सेकेंड्स के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा. सो वी हैव टू always give at least 10 minutes for sleeping. Okay, हम इसको टेम्पररी शटडाउन भी बोल सकते हैं. कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए वो शटडाउन हो जाएगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं. उसके बाद फिर से सिस्टम एंटर बटन हिट करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. देन देयर इज ए सेकेंड ऑप्शन, that is so again we will go in personalized setting, lock screen, and again
will set the screensaver also. So according to time, we can change the screensaver also. Okay, so they have given 3D, for example, 3D text I want, or I want waiting period for 2 minutes. So after 3 minutes, every times it will, when you log in your screen or when it goes in the sleep mode, you will see such kind of a screen. जब आप उसको स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं तब इस तरह का विंडोज 10 मैसेज आएगा आपको. ठीक है, you can change, see the changes like this. And you can check out the output in the preview. Look at this, this is my output. मैंने प्रीव्यू चेक किया तो प्रीव्यू में आपने स्लीपिंग मोड के, ये आप देख सकते हैं कि जब वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा इस तरह का स्क्रीन सेवर सेट हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई. ओके, सो एवरी टाइम जब भी सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा तो आपको कुछ पीरियड्स के लिए, 2 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए, आपने जो भी टाइम पीरियड यहाँ पे सेट किया है उस टाइम पीरियड के लिए वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा. Okay, so finally, whatever changes you have made, for example, you want to change the themes of the screen. Okay, you have to always click on save theme. Okay, even I can change the icons setting from this themes option. These are the different icons, but I want to change the icons. I can change my icons also. Here you can check out. Here I will change my icons. You can see my computer symbol is changed now. Apply. Okay, every time you have to, after applying the setting, you have to set apply. Okay, and you can see the total screensaver is changed now, and even my computer icons is changed. This is the way you can change or you can manage your desktop, or you can also call it as a customization of desktop. Okay, thank you very much.